Yes, Dr. Sita, you can start. Thank you so much, sir. So, very good morning to all. Sabhi ko namaskar. Parametric tests are those statistical tests that assume the data approximately and follows a normal distribution. We have three important tests like Z-test, T-test, and ANOVA. That is usually known as the analysis of variance. But the basic assumption is that the data of the whole population follows a normal distribution and not the sample data that we are working with. The measurement of variables, which is a part of these parametric tests, is of great interest, and it is done on interval or ratio scale. In fact, we can say that the interval and ratio data are parametric and are used with parametric tools in which distributions are predictable. So with this brief introduction, a very good morning to all the dignitaries, esteemed colleagues, and participants on this first Sunday of April. On behalf of the organizing committee, Research Circle, and as a co-convener and moderator of this session, I, Dr. Shweta Rani, along with Dr. Jugnu, we both take this pride and opportunity to extend a very warm welcome to all of you present in day 7 on parametric test, interval or ratio metric scale-based data, which is the 7th session in series in the 10 days national level faculty development program on understanding issues of research publication in UGC CARE journals, which is jointly organized by Council for Teachers Professional Development, CTPD, and Social Development and Research Foundation, SDRF. So first and foremost, I am delighted and honored, though Professor Gopal Krishna sir is not present right now, but it's our moral responsibility to give him a warm welcome, even in the offline mode. I also extend a warm welcome to Professor Satyendra Gupta sir. He's also not available, but sir, virtual to you. Our resource person for the day, Professor Paresh Shah, Principal and Professor, Rai Business School, Rai University, Ahmedabad. Dr. Sanjay Kumar, the convener of Research Circle and Program Director of SDRF. Of course, Professor Danya Gupta ma'am, North Zone President of CTPD and Dean School of Education, K.R. Mangalam University, Gurugram, and all the esteemed members of the group, the research scholars, the teachers, the colleagues, and the participants of today's session. Now, moving ahead, may I request Dr. Sanjay Kumar to kindly enlighten us with his visionary presence and to formally mark the beginning of the session. Sanjay sir, over to you. Thank you, Shweta ma'am. आज वैसे गोपाल सर को होना चाहिए था, मेरी जगह पर नहीं है जी सर। और एक कुछ चेंजेस भी हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में, जैसे कि डॉक्टर तानिया गुप्ता मैम अब सीटीपीडी ट्रस्ट की सेक्रेटरी जनरल हैं और डॉक्टर जुगनू खट्टर भाटिया सीटीपीडी इंडिया की सेक्रेटरी जनरल। थोड़ा सा चेंजेस है इस सेशन से भी। और सीटीपीडी इंडिया सीटीपीडी ट्रस्ट का एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है टीचर का, ये लोगों को भी पता होना चाहिए, थोड़ा सा मैं बता दूं। आज के सेशन में जो 7th सेशन है, जिसमें स्पेसिफिकली नॉन पैरामेट्रिक और पैरामेट्रिक टेस्ट की जब हम बात करते हैं, तो रिसर्च का ये तकरीबन देखा जाए तो लास्ट वाला जो स्टेज आता है कि हमने सब कुछ काफी अच्छे से किया और डेटा भी बड़ा अच्छे से कलेक्ट किया, लेकिन जो एक वैलिड रिजल्ट्स हैं, अगर यहाँ पर आके जो टेस्टिंग है, स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग, अगर वो थोड़ा सा मिसमैच कर जाती है, मींस कि अगर डेटा नॉन पैरामेट्रिक मान लीजिए ऑर्डिनल या नॉमिनल स्केल पर है और वहां पर हम पैरामेट्रिक टेस्ट का यूज करें, या डेटा आपका रेशियो स्केल पर या इंटरवल स्केल पर है और वहां पर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का यूज करें, तो कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक होने के बाद भी जो हमारे आउटपुट है रिसर्च का, वो लास्ट में आके आपने बहुत हार्ड वर्क किया हो, लेकिन लास्ट में आके वो चीजें कहीं ना कहीं वैलिड नहीं रहती, रिजल्ट्स उतने ट्रू और वेरीफाइड नहीं होते, उतने अच्छे नहीं होते रिसर्च के आउटपुट्स, सिर्फ इस वजह से कि हमारी जो नॉलेज है स्पेसिफिकली स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग को लेकर वो करेक्ट नहीं होती है। तो काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैं परवेश सर से आज के सेशन में दो ही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक तो जो मेजरमेंट स्केल्स हैं, स्पेसिफिकली नॉमिनल स्केल या ऑर्डिनल स्केल जहाँ पर कि हम पैरामेट्रिक टेस्टिंग की बात करते हैं, या फिर इंटरवल स्केल या रेशियो स्केल जहाँ पर हम पैरामेट्रिक टेस्ट की बात करते हैं, पहले वाले में नॉन पैरामेट्रिक की,
और देखा जाए तो नॉर्मली नॉन पैरामेट्रिक जो डेटा है वो आमतौर पे नॉट 100% क्वेश्चनियर्स या सर्वेज के थ्रू कलेक्ट होता है, जबकि वहां पर भी हम पैरामेट्रिक टेस्टिंग का बहुत सारा यूज करते हैं। और जो पैरामेट्रिक टेस्टिंग के लिए स्पेसिफिकली देखा जाए तो जो एक्सपेरिमेंट्स हैं आपके या जो टेस्ट हैं, जो एग्जामिनेशन स्कोर्स हैं, उन डेटा के ऊपर खासकर अप्लाई किया जाता है। तो ये जो कुछ स्पेसिफिक एरिया है कि पैरामेट्रिक टेस्टिंग या जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट है पैरामेट्रिक, वो स्पेसिफिकली किन सिचुएशंस में हमको अप्लाई करने चाहिए और किन सिचुएशंस में नहीं। एक तो ये मेरी रिक्वेस्ट होगी कि परीक्षा सर से कि इसको इंक्लूड करके चलें आज के सेशन में। और सर एक दूसरी रिक्वेस्ट मैं हमेशा करता हूँ, क्योंकि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं मेरे पास पर्सनली, क्योंकि टच में रहते हैं, बहुत सारे कॉल्स भी आती हैं मैसेजेस के थ्रू भी, कि अगर आप इस सेशन को थोड़ा बाइलिंगुअल रखें, क्योंकि अगर हम सीधा एक इंग्लिश वाली लैंग्वेज में ले जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडिया में, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं कहीं फिर वो एक नेग्लेक्टेड सा फील करते हैं, वो चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो वो एक मेरी सेकंड रिक्वेस्ट है आपसे। एंड ओवर टू यू सर, थैंक यू सो मच। Thank you very much, sir. Dr. Sweta ma'am. Thank you so much, Sanjay sir, for providing your effective address and providing Paresh sir that what are the requirements that we are expecting from today's session. So on behalf of CTPD and SDRF, may I have your august presence to formally welcome our resource person of the day. Professor Paresh Shah is a renowned and well-acclaimed industry academia, accredited management teacher, and a well-renowned researcher. Professor Shah is presently serving as the principal and professor, Rai Business School, Rai University, Ahmedabad. Sir did his PhD under the guidance of Professor I.M. Pandey, Professor of Finance, and then Dean of Indian Institute of Management, Ahmedabad, India. He holds Diploma in Teaching Skills for Educators, Diploma in Decision Making, and Diploma in Educational Psychology from Allison Education, United States of America. DLIT has been awarded by International Biographical Center, Cambridge, England, and Commonwealth Vocational University. He is the director, Fennell Institute, LLP, Professional Coaching Center, Ahmedabad. Sir has at least a total experience of almost 37 years, including industrial experience of nearly 16 years and full-time teaching experience of 23 years. His area of interest is teaching, research, and writing in finance, accounts, and control area. He is also the corporate trainer, resource for faculty development programs and workshops across India. He has authored many books under the broad domain of academics and management. Professor Shah has published 77 research papers in peer-reviewed journals. His research publications can be found in the national and international journals of very high repute. Research papers include 22 international research papers. He has also authored 22 books. Out of those, 10 books are universally accepted at global market. The international publishers with which he is associated is Oxford University Press, United Kingdom, Lambert Academic Publishing House, Germany, to name a few. Along with his earning various academic accolades, Professor Paresh is the editorial board member of 11 international journals and 13 national journals. He is also the member of 21 professional and academic institutions. He has conducted 24 colloquia. 10 research scholars are awarded doctorate under his able guidance. Presently, 6 research scholars are pursuing doctorate study under him. Professor Paresh has many awards and numerous accolades to his credit, both at the national and international levels. And I would like to name a few, which is Global Outstanding Management Teacher Award, Outstanding Gen Educationist Award, Bharat Excellence Award, Rashtriya Jewel Award, Rajiv Gandhi Gold Medal, and Outstanding Academic Contribution Award, and many more to his credit. Our resource person of the day, Professor Paresh Shah, has a very firm philosophy in life, and that is achieve the academic excellence through teaching, research, and academic writings that in turn supports the young generation of the global village to think differently and to apply the creativity in the process of life with a mission to enhance the social welfare of the citizens across the globe. That is really commendable, sir, and worth appreciating. So without much ado, I would request Professor Paresh Shah
To begin with his lecture, parametric test, interval or ratio metric scale based. Sir, over to you. Thank you very much. But there is no need to explain so much thing on me because I am a still student. Because as a teacher, I am always supposed to be the student. Because that is going to be the one of the very important thing. Thank you very much to Dr. Sanjay Chaudhary, Dr. Satyendra Gupta, Dr. Gopal Krishna Thakur, Dr. Tanya Gupta, Dr. Jugnu Bhatia, and none of that, Dr. Sweta Yani. She is the main coordinating the particular course. Very important thing in the research methodology, what I see, that majority of the students, participants are not aware about it, that what is to be done and under which circumstances, which test is to be used. I'm not in a position to move the slide. I don't know what happened. I will just check for a moment. You slide move nahi hoya yaar. I think my screen is viewable to you. Sir, it's not. It's not viewable. Okay. So I understand the problem. Now I think it may be viewable. Sir, still not. Still not? Oh. Then what's happened? Now it's viewable? Say, Sanjay, say, is it viewable or not? Not viewable, sir. Wait a minute. Let me check the settings. Something could be done by you? Wait a minute, sir. So you have made me the co-question, no? I'm changing some settings. Wait a minute, sir. Okay. You try once again. Now it's viewable? No, sir. Just remove the sharing and do again. What I should do? Remove the sharing and then again reshare. Okay, remove the sharing and further I should say it. I don't know how to. Okay, now I am trying to make it. Yes. Now I have started to say it. Sir, it's visible. It's visible. You can start, sir. It's visible, no? Sure. Yes. Okay. See, the very important point is that whenever we talk about the research methodology, students are normally being or any research scholar or any person who is preparing the research paper to get it published in the national or international journal. They are quite capable to the two things in the beginning very well. That is the introduction of the point and the literature review did with properly. A number of times it's happened during my review and editing work, I've seen that the paper writer have just taken the statistical test which are being used by the other person from whom the literature review have been done. So सबसे ज़्यादा important ये है कि we should know what is statistics and what is the different type of schemes and कब आपको यूज करना चाहिए. Majority research scholar, or I can say that the body researchers after the doctorates, they are not aware that what type of the parameters they have to use it and why they have to use it. So I will take further in the beginning 10 minutes or so to only explain in detail, in small words, the words of statistics and something. I know every one of you are being aware about it,
but I like to be that you can capture it. Another thing is that एक रिसर्चर के हिसाब से आपको एक ये बात ध्यान रखने की है कि आपके डेस्कटॉप पे घर में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की बुक, 100 स्टैटिस्टिकल टेस्ट की बुक घर में होनी चाहिए. That is one of the very important thing. Second thing, in addition to your subject or core area, you should study the good research papers published in the internationally well-known journal or India's well-known journal, like a Vikan of IIM Ahmedabad, Decision of IIMB, some journal of the IIM Indore, the working papers published by the teachers of good colleges, including the IITs and so, you should study it. Then it makes a very important thing. And that is basically known as the econometrics. Usko econometrics कहते हैं. It means that you are applying the structure of statistics, fundamentals of statistics to come to the conclusion. Econometrics, people are going away. घबराते हैं econometrics. इसमें कुछ इतनी जरूरत नहीं है. I just recall when I completed before 29 years ago my PhD, 1989 to 94 batch. At that time, we have to do majority thing by manually. At that time, the computer having started, Notice 1, 2, 3 program was there. No NICA SPSS today's facility. And when I have to complete my PhD within the given time period, and that too, after leaving the industry, I came to do the doctorate in IMA. So, वहाँ हम लोग कोई भी स्टैटिस्टिकल रिसर्च करते थे, यदि जो उसको फंडामेंटली कौन सा टेस्ट अप्लाई किया वो नहीं मालूम होगा, तो इट वेस्ट ऑफ टाइम. टुडे ऑल्सो द मेजॉरिटी टाइम अपने जो बड़ी रिसर्चर्स है ना, वो सब कोई SPSS टेस्ट कर डालते हैं, उसका रीजन पब्लिश करते हैं. जब वो पेपर रिव्यू में आता है तो हम लोग उसको थ्रो अवे कर देते हैं, डायरेक्टली रिसेप्ट कर देते हैं. बिकॉज सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज वो है कि क्या टेस्ट करना है. सो इट्स अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स और साइंस. एंड आई से वन थिंग कि यदि आप अपने फील्ड से बाहर का भी पढ़ते हैं तो आपकी कैपेसिटी बहुत बच जाती है, अंडरस्टैंडिंग बहुत बच जाती है. मैं आई अपना एग्जांपल ले लूं. आई एम अ स्पेशलाइज्ड इन द फाइनेंस अकाउंट्स इकोनॉमिक्स सेक्टर in broad terms, but somewhere I got the interest now developed in the knife science, which may be something different way. I developed my interest in the nursing research, and somewhere we work on that. So you know, at IIP, at Indian Institute of Public Health, we people are involved. And we try to say that in what way the statistical techniques are to be applied by the doctor without 1% level of significance. So it's basically the numerical interpretations have been done by us. Second, very important point, that it is the art and science of connection, organization, presentation, analysis, and interpretation of data. But I put it as a researcher in the different way. That first you decide what may be your requirement of the interpretation. How would you like to interpret it? Would you like to interpret in a normal sense or the abnormal sense? So don't have to say that what should be your answer. You should go to the specific parameters, that what conclusion you should come. So based on that, you decide the need of the data. That is one of the need of the information. So based on need of the information, you go towards need of the data, decide for the connection tool, maybe for the non-parametric test or parametric test.
but your mind is very clear that what you should do. आपको क्या करना है वो मालूम चाहिए. So I always say that कि सबसे clear बैकग्राउंड से जानू कहिए कि क्या होता है, क्या करना है मुझे, क्या कंक्लूजन लाना है, what is my final objective. Based on that, you can do it because you are already aware about the research question. So आपको वो हिसाब से जानना चाहिए. So there is a quote have been given that when you can measure what you want is going to be the one of the very important thing. What you want to measure is going to be give you the very specific idea about the situation to be happen. So it is a very nicely you will be come down to the connection of the data, engine of the data. So the quote having given, when you can measure what you are speaking about and express it in the numbers, you know something about it. It's a very important word. That is a Lord Kelvin, British physicists have talked about it. And as we know, the medical science is the starter of the work, of the research. But when you cannot measure something, जो चीज आप measure नहीं कर सकते हो, उसको आपको express करना पड़ता है. नहीं, जब हम लोग कहते हैं कि मैन फीमेल, ओके, आप उसको कोई पॉइंट पे मेजर नहीं कर सकते हो, लेकिन आपको इसका आइडेंटिफिकेशन डेटा बनाना पड़ता है. So you decide according to that. So few key definitions have been given, that population and sample. Understand, I put very clearly, below the population, I put the words of parameters. Just see the my linking being done. So population is a connection of the own items of my interest. यदि मुझे वो देखना है कि उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर इन द पर्टिकुलर फर्टिलाइजर यूज करने से कितना बढ़ा है, तो मेरा पूरा पॉपुलेशन हो गया द फार्मिंग एरिया इन द स्टेट ऑफ यूपी. एंड बेस्ड ऑन माय पास्ट एक्सपीरियंस or based on some claim done by other party, I put this parameter. I assume some hypothetical value, उसको parameter कहते हैं. जब अब मैं पूरा तो on farmers को तो मैं नहीं ले सकता हूँ, so मैं कोई subset of population select करता हूँ. नहीं का 1 or 2 तहसील तालुका, 2-3 तहसील तालुका को ले लिया, इसमें से सैंपल लिया, इससे जो मैं इंड का आउटपुट काउंट करता हूं उसको स्टैटिस्टिक्स कहते हैं. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट. Parameters gives the assumed value or what the manufacturer of the fertilizer, like if कोने कहा है कि इससे इतना परसेंटेज आपका इंड बढ़ेगा, तो अब मैं सैंपल लेता हूं कि यदि वो हुआ है कि नहीं. डॉक्टर्स जो होते हैं, मैं यहाँ थोड़ी सी बात आपको डॉक्टर की सुननी पड़ेगी. जो डॉक्टर्स होते हैं या जो फार्मास्यूटिकल रिसर्चर होते हैं, वो लोग पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन का टेक्निक बनाते हैं. बाद में then they are making a 2 set of patient. 1 set of patient have been given a H1 medicines which have certain chemical center. Second group of people have been given a medicines of the same shape and color without any chemical. And then they taste what the effect is coming. So no, it's required the 1% level of significance. So here we can say that population versus sample. Like I put the 26 alphabets of the English, that is my population. So 26 is basically parameters. Now I compute the value from the sample.
So I can say that I have taken totally 9 alphabets I have chosen. So that is known as the statistics. Now another example I can give that जो मेरा पूरा population होता है वो पूरे population में आएगा name of unregistered voters, incomes of own families living in the state of Gujarat, annual return of own stake traded in the stock market, average grade point in your university. So यहाँ मैंने सबको तय किया है कि एक साइड पे है registered voter means political science, one side पे I am saying income of own citizens means society at large, standard of living. When I say the stock market return, means I'm taking that how many people are being involved in the financial activities and making the money. Fourth, I take the universities. Just it is for the example. The list can be go more and more as you read more and more. अब जितना ज़्यादा पढ़ेंगे इतना आपको ज़्यादा मिलेगा knowledge. So इसमें random sampling हो जाता है. So each member of the population, हर एक मेंबर को इक्वल चांस मिलता है. यहाँ आप देखते हैं कि राइट हैंड साइड पे मैंने 12 सैंपल साइज की है. नाउ अंडरस्टैंड दिस इज नोन एज सैंपल फेक. वेरी इंपॉर्टेंट. पॉपुलेशन मैं फिर से रिपीट कराऊं. मैंने कहा कि यूपी स्टेट के सब फार्मर्स वो मेरा पूरा पॉपुलेशन हुआ. इसमें से मैंने 3 या 4 टेस्टिंग को स्टडी के लिए चूज किया तो उसको कहते हैं सैंपलिंग फेम. वो सैंपलिंग फेम में से अभी मैंने मानो कि 4 टेस्टिंग काउंट तो सिलेक्ट कर ली है. इसमें से मैं पर्टिकुलर फार्मर्स को पिकअप करूंगा, उसको सैंपल कहते हैं. So I hope everyone understood this point very categorically. Sanjay sir, I hope everyone is being understood. Yes sir. Abhi actually I have stopped the chat setting. Otherwise, I think everybody is understanding. And no last problem. Question I'm just making it clear for first 10 minutes that I am audible and my PPTs are viewable or not. No, and then now I have no problem. So now I'm confident that nothing goes wrong. Okay. Yeah. Now when I say the another point. So जब हमने statistics किया तो statistics के 2 पोर्शन निकाले. एक पोर्शन में हमने कहा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. इट मींस जो आदमी पढ़ा लिखा हुआ नहीं है वो भी ग्राफ देख को अंडरस्टैंड कर सकता है कि यदि मेरा आउटपुट इंक्रीज हुआ है कि नहीं. एक छोटा सा फार्मर है जो पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन उसको वो मालूम है कि लास्ट ईयर पर हेक्टर मेरा 2000 टन पर्टिकुलर इन प्रोड्यूस हुआ था. ये साल 2200 टन प्रोड्यूस हुआ है. तो वो सोचेगा कि मैंने कौन सा चेंज किया था मेरा वर्किंग में. ओके. मैंने कौन से केमिकल में चेंज किया था, कैसा मैंने मिक्सचर चेंज किया था, कैसे मैंने हार्वेस्टिंग किया था, और उसको वो अपने माइंड में अप्लाई करेगा. उसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. नाउ एक रिसर्चर के हिसाब से हमारा मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि हमको सोसाइटी एट लार्ज काफी सपोर्ट करना होता है. तो उसको कहते हैं इन्फॉर्मेशन स्टैटिस्टिक्स, जहां हम लोग प्रेडिक्शन करेंगे, फोरकास्ट करेंगे, एस्टिमेट करेंगे और वो लोग हम डिसाइड करेंगे. लाइक हम लोगों ने भी स्टार्टेड इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट. I'm one of the founder members. The very important objective of our international association is that every researcher should come across to that and they give some suggestion on their own. Now it's up to the policy makers by considering so many other factors, but we as an individual take the care of the certain factors and look towards the impact of that. So it is basically known as the 3 steps are involved in statistics. Number 1, you clean and organize the data
it means that there is a data preparation is to be done. Now, after the data preparation, we should count categorically the descriptive statistic. Yes. Your slide is not visible. Slide had not been visible? Yes. How is it? अभी बंद हुआ? I think 15 minutes हो गए. It's still not shown. Oh, I don't know what is going on today. Maybe कोई नहीं, ये तो stay तो है ही still. आप एक बार ना फिर से रिमूव करके फिर से कीजिए, आप एक बार रीशेयर कीजिए. Maybe some technical issue. This is what I always used to be share everyone. Now I hope you are viewable. Yes, sir, visible. Visible. Okay. I don't know, you know, and that's why I used to be safe when I was being associated with some government organization. Don't try to think that we are in US, because US was developed, what you can say, infrastructure have been developed, and then the people went. Here the people are there, and you have to develop. So there are drastic differences coming between the two. You know, that is the person have to see that. इंडियन पब्लिक को कोई बेनिफिट नहीं होता है, तो वो लोग सेविंग करते हैं और सेविंग के ब्याज में से बुढ़ापे में जीना है. अमेरिका वाले को सब कुछ है, उनको पैसा मिलने वाला है. So you know, that is the difference between the two parameters. So you know, blindly applying some country's model is not our work, and that's why I say that the understanding of the econometrics is very important. Any corner of the working theory. Second is coming descriptive statistics, and third level we come to the inference statistics, that how the statistics have been inferred by you and estimation have been done. Then we come to the point categorically that so there are the variables that to be decided. That is why I say India versus America. My objective was next later on what I'm supposed to discuss. So there are the variables are there. Like Indian culture, different way, no government benefit, so people decided to save the money. Marginal propensity to save, 39% था. लोगों का saving capacity 39% था. Previously, in the first decade of the 21st century, it was 44%. Today, it is less than 30%. So it's make the effect on the young generation. So variable is a characteristic you know for any individual, entity, country. And it takes the very important words I use, that it takes the different venues for different individuals. So it may be categorical or it may be quantitative. But somewhere there is going to be the constant value to come. देखिए जब हम लोग सोचते हैं कि पर्सन को फूड चाहिए, whether the person is earning 20,000 rupees per month or earning 0 rupees per month, but still they require the, what you can say, for example, 400 grams of food per day minimum. So for 30 days, he requires the foods of 10,000 grams. So for that 10,000 grams is a constant value, which government को एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि ये क्या है. वो हम लोग एकेडमिशियन कहते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट से. एक बात समझ लेना, एज ए एकेडमिशियन वी शुड नेवर से दैट वी आर 100% श्योर. वो हमारी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है. हमको अपने आप को लिमिटेड करना है कि मैं इससे आगे के वेरिएबल्स को नहीं देखा. सो गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास बहुत सारे वेरिएबल्स रहते हैं, उनको हमारा सबका सपोर्ट चाहिए. एंड दैट इज व्हाई वी हैव द नेशनल लाइब्रेरी इन द कलकत्ता, वन ऑफ द फेमस लाइब्रेरी. ऑन टाइम documents having available. There, so when we describe the data, we are look at the oddities in the data. Means what the data is being odd.
And that's we are going to be consider very categorically here that whatever outliners in the data. आपको मालूम है कि जब हम लोग एवरेज स्कूल में या अपनी कॉलेज के पर्टिकुलर डिवीजन के स्टूडेंट्स की अपने सब्जेक्ट की एवरेज निकालते हैं तो हम ऑन 60 स्टूडेंट्स के मार्क लेके एवरेज निकालते हैं. But there the possibilities one students may have a very high mark. So first highest and second highest have a very high gap. But what happened? The first number student will secure very high mark going to be make the effect on average. So those students I have to remove and that is known as outlier. ऐसे होगा एक तो स्टूडेंट है जो में 0 मार्क्स में आते हैं because we are going to be हमको तो सब टाइप के स्टूडेंट्स मिलने वाले हैं. सो मेरा एक टीचर के हिसाब से जो परफॉर्मेंस है इसमें मुझे सबसे हाई मार्क आए हैं, सबसे कम मार्क आए हैं, दोनों को रिमूव करना पड़ेगा. वो कैसे डिसाइड करेंगे? ये तो मैंने अपने क्लासरूम का एग्जांपल दिया. पर जब हम लोग सैंपल लेते हैं नॉर्मली हमारी एक सिस्टम है. मैं डायरेक्टली कुछ पॉइंट पे ही आया हूं that number of sample should not be less than 400. This is one of the very important things. आपको number of samples to be reported exactly 383. मैं कहता हूँ 400 to be reported in the paper or any place. अभी 400 ही मैं सैंपल लूंगा तो मैं आउटलाइनर को मैं कंसिडर नहीं कर सकता हूँ. सो मुझे 500 से 600 सैंपल लेने चाहिए. मैंने जो सैंपलिंग फ्रेम बनाया मैंने आपको समझाया सैंपलिंग फ्रेम क्या होता है. मैंने जो 3 टेस्ट लिए यूपी के उसको सैंपलिंग फ्रेम कहते हैं. इसमें से मैंने सैंपल सिलेक्ट किए. मुझे मालूम है कि कितने लोग कौन से इंटेलिजेंट लेवल पे हैं, मैंने कैसे मैं काम करने वाला हूँ. तो मैं एक्चुअल कनेक्शन ऑफ सैंपल में भी 500 और मोर एंड आउटलाइनर को मैं रिमूव करूंगा. सो आई कैन समराइज माय डेटा इन द न्यूमेरिकल फॉर्म. So there are the 4 type of the scales are there. I think everyone knows it, but may have thoda different है. So you can speedily understand. Nominal scale, that the classification have been done. That is basically the playing a particular bond. So you can say they are mutually exclusive and connectively exhaustive categories. Like you can say cricket player, football player, like that. Then second is coming is a ordinal. वहाँ हम क्लासिफिकेशन भी लेते हैं और ऑर्डर ऑफ सिग्निफिकेंस भी लेते हैं. तो इसमें ऑर्डर कैसे आता है? मानो कि जब मेरे पास के ग्रेड है तो A, B, C grade is basically indicating that A grade is better than the B. C is lower than the B. Or I can say education level. PhD is better than the master. So ये होगा वहां मुझे मेन मीडियम रेंज कुछ देखना पड़ेगा. और सीनियरिटी लेवल आएगी. कोई में सीनियर्स हैं, मिडिल लेवल पे हैं, जूनियर लेवल पे हैं. जब ये 2 चीज आती हैं सो क्या कहा मैंने? क्लासिफिकेशन एंड ऑर्डर. वो 2 ही चीज जो हम लोग काउंट करते हैं तो उसको नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में लेना पड़ेगा. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सो मैंने कहा नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट टू बी अप्लाई. अभी थर्ड पॉइंट पे मैं इंटरवन स्केल पे आता हूँ जो मेरा मेन एरिया मुझे डिस्कस करना है. बट इससे पहले मैंने ये बात इसलिए की कि आपका बेसिक क्लियर हो जाए. यहाँ मुझे 3 चीज देखने की है. जब मैं इंटरवल में आता हूं तो मैं डिस्टेंस कंसीडर कर रहा हूं. नाउ कैसे मैं डिस्टेंस कंसीडर करता हूं? तो ये अपना वो थर्मोमीटर कहते हैं या टेम्परेचर मीटर कहते हैं, वहां पर्टिकुलर स्केल का डिफरेंस रहता है. सो इक्वल डिस्टेंस एग्जिस्ट बिटवीन द नंबर्स. So जब मैं क्लास के स्टूडेंट्स को स्टूडेंट हैव सिक्योर्ड 1 to 5 मार्क्स, 5 to 10 मार्क्स, 10 से 15 मार्क लिए हैं तो क्या हुआ? मैंने डिस्टेंस ले लिया.
उसमें उसको इंटरवन स्केल कहते हैं। अभी फोर्थ आएगा मेया रेशियो स्केल। इसमें पहले के तीन तो पॉइंट परिवार नहीं बने, वेरिएबल नहीं बने हैं, पॉइंट्स नहीं बने। फोर्थ में ऐड किया हूं नेशनल ओरिजिन, नेचर origin, for my mistake to speak, nature origin. Under the nature origin, I can say that what is the weight, what is the height. You know, अपने 3 तक जब हमने कहा तो हम लोग जियो को कंसीडर नहीं करते थे, लेकिन यहाँ एब्सोल्यूट जियो को थियोरेटिकली कंसीडर कर सकते हैं. Like number of children means the couple who have no children. So geo sign is applicable. Height and weight में geo नहीं होगा, वो हम समझते हैं. But there is going to be minimum constant point. जो मैंने बताया, हर पर्सन को एवरीडे 400 ग्राम फूड चाहिए. वो मैंने जो एग्जाम्पल बताया आपको, उसको हम लोग कॉन्स्टेंट पॉइंट कहते हैं. वहां अपना स्केल वहां से आगे चलता. I think you got the point. So scale can be starting from 0. It can be go to the negative side also. It can go to the positive side also. Or the scale can start from a particular minimum value. इसको हम लोग कहते हैं पैरामीटर शिफ्ट. Next we have been coming towards the point of यहाँ मैंने ग्राफिकली बहुत अच्छी तरह से तैयार किया है बताने का कि नॉमिनल स्केल में एक हॉर्स होता है, ऑर्डिनल स्केल में 3 होते हैं, एक विन करता है, दूसरी स्पीड से जाता है वो सिस्टम से, तीसरा है इंटरवन स्केल. It means that whenever there is a marathon or something is happen, doing the walk, people are making the distance. कि ये आदमी स्पीड से जाया है, ये आदमी स्लो जाया है, इतना उसने कवर किया. क्रिकेट में भी ऐसे हम लोग इंटरवन कर लेते हैं. ये शो हम लोग बहुत डिटेल में जाते हैं कि 1 मिनट और इतनी सेकंड्स में इतने माइल्स कवर किए. आई थिंक द पॉइंट्स आर क्लियर. अब मैं मेरा मेन पॉइंट चालू कर रहा हूं. तो अब तक मैं मेन पॉइंट पे था, लेकिन थोड़ा बेसिक बनाया था मेरे कंसेप्ट से. नॉमिनल स्केल, you know the student ID number, yes or no? Now student ID number has no meaning. So it is going to be the counting. So we have to use the frequencies and the mode. Number 2, man, female, whether you buy or did not buy particular thing. So you can say 1 or 0, not buy. Ordinal scale, we can say student classing. Yank into your 3 favorite movies. You can say that the particular thing you are dissatisfied, satisfied, very satisfied, delighted, like that. So हम लोग नॉर्मल कहते हैं ना निकट स्केल have been used. 5-point Nikert square, 7-point Nikert square, like that being used by you. So based on that, you can draw the graph, pie chart, histogram, and you can work out. So it indicates so you should use frequency, mode, median, and age. जब हम लोग इंटर 1 में आते हैं, वो हमने ऑलरेडी सेंसर्स और फैन हीट का टेम्परेचर का पॉइंट्स देख लिया है. और out of 100, how much marks we are giving to the boys or our students. So वहाँ, in addition to the cover up to the range, we are going to be work out mean, variance and standard deviation. So जब हम लोग इंटर 1 की जो बात करते हैं, frequency to the standard deviation is covered under the descriptive statistics. रेशियो में हम लोग ऑन टाइप ऑफ अरिथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं. लाइक हम लोग लीनियर इक्वेशन, कोऑर्डिनेशन, वो सब करेंगे. अब मैं आगे आऊंगा कि जब मेरा इनेशन बेस पे होता है
तो एक मैं मेरा अपना सैंपल फेम ले लूंगा या बाय वेरिएट कर लूंगा, 2 तालुका है, 2 तहसील है, उनका कंपैरिजन करूंगा और डिफरेंट स्टेट के साथ कंपैरिजन करूंगा और बेस्ड ऑन दैट मेरा जनरलाइजेशन होगा। लाइक कोविड के टाइम पे our Punavane person ने developed the very nice vaccine. Now that vaccine has given the generalization that the vaccine produced by our India-based person is good enough. Now you know very recently government of India ने certain number of pharmacy company को close करवा दिया compensation, because they found that they are covered under the generic drug. I think 69 companies or so. They have been making the generic drug. But when they make a generic drug, they are not maintain certain parameters on a watchful way. मेडिसिन में वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 मिलीग्राम की आपकी मेडिसिन होती है या 10 मिलीग्राम की मेडिसिन होती है। जब आप इसमें देखते हो तो 5 से 6 टाइप के केमिकल्स और डिफरेंट टाइप के पॉइंट्स यूज होते हैं। यू नो उसकी क्वांटिटी कुछ हिसाब से फिक्स होती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाउंड किया कि वो जो पैटर्न ड्रग अभी जेनेरिक ड्रग में आ चुकी है, लेकिन पेटेंट वाली जो सिस्टम यूज कर रहे थे वो जेनेरिक वालों ने फॉलो नहीं की है। रिजल्टेड टू प्रॉब्लम्स आर हैपन टू द सोसाइटी एट नाइट। सो उसको रिमूव कर दिया। सो यू अंडरस्टैंड सर इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स। सो देयर इज गोइंग टू बी द पॉइंट्स टू कम that is known as the double use of a data set. Very important words I am using. Double use of a data set. So you can say whom may be studied by you. So observations. What are the samples you should pick up? What means what type of the variables you should know. Like I said that मैंने कहा कि यूपी में मैं देख रहा हूँ कि पर्टिकुलर टाइप के फर्टिलाइजर्स यूज करके मेरा प्रोडक्टिविटी कितना बढ़ा है। तो क्या हुआ, वेरिएबल हुआ पर्टिकुलर फर्टिलाइजर, इस क्वांटिटी पर हेक्टर यूज, एंड मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया कि कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस हुआ। व्हाई नाउ द क्वेश्चन इज कमिंग, व्हाई द डेटा हैव बीन कनेक्टेड। लाइक एट इफको कनो IFFCO Kannai in Gujarat, where I am the MDP, I am taking the MDP regularly, where we connect the data to know at a first level that whatever the new type of the combinations we are creating, यदि वो अपने यहाँ इनका प्रोडक्शन बढ़ाने वाला है या नहीं। So that is the data. How was the data connected? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम लोग कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को कुछ काम में लगाया जाता है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हमारी यूनिवर्सिटी में भी पूरा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। वहाँ हम लोग कुछ चेंज करते रहते हैं, देखते हैं कि ये पर्टिकुलर प्लांट के साथ ये प्लांट का प्रोडक्शन बाद में हो सकता है कि नहीं। So instead of taking a 2 crops in a year, can we take a 3 crops in a year? Then what is the changes are to be done? So इसके लिए छोटी सी जगह में स्टूडेंट्स लोग उसका इवेल्युएशन करते हैं under the guidance of the teacher, no doubt about it, and that is going to be give the guidelines to the bigger organizations, and when and where the information is given. It's very important when and where the information is given. The atmospheric effect in the state of Gujarat is different than the state of UP. Very important. So आपको ये देखना पड़ेगा कि कहाँ की इंफॉर्मेशन रिलेवेंट है। यदि मैं अभी गुजरात में ऐसा सोचूं कि युद्राक्ष का क्रॉप तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गुजरात is a different type of the state, and Yudrax can be happen only in the Himachal side. So,
from where I'm collecting the data, or if I'm trying to introduce something new in my system, how I'm doing it, वो सबसे important है. Next आएगा वो variable, वही मैंने कहा quantitative and quantitative. Quantitative gender, so dichotomous, or it may be the polynomic, means band of PC. So many brands of the PCs are being available in the market. Discrete data पे मैं कहूँगा number of children in family. It cannot be 1.2. But when I say the weight of the individual, it can be 55.2. But I can't say the children 1.2. I have to say 1, 2, 3, 4 discrete way. Same way stocks in a conflict. So this is the another methodology to decide the variable types. So no, one is quite important. सबसे ज़्यादा important होता है. पहले हमको ये decide करना पड़ता है कि मुझे क्या conclude करना है. Don't say what you want. Unbiased conclusion, what you like to study. वहां से backward जाइए. अप लेवल पे जाइए कि कैसे मुझे डेटा कनेक्ट करना है, कैसे ये काम करना है. वो टाइम पे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा स्केल ऑफ मेजरमेंट आएगा एंड कौन से वेरिएबल मुझे काउंट करने हैं. सो ऐसे तो आप देखें तो वो यही होता है. डिकोटोमस इज अ नॉमिनल, पॉलिनोमिक इज अ ऑर्डिनल, डिस्क्रीट इज अ ratio, and continuous is a interval scale. I think you got the point. Very categorical. Because weight में हम लोगों को यही करना पड़ेगा कि 50 to 55 weeks. Because person may be covered under any category of weight. So हम लोग inference करते हैं based on evidence. So evidence is very important. And the procedure what we use for sample say, वो मैंने कहा मुझे 500 से 600 सैंपल लेने पड़ेंगे. काफी लोग मुझे कहते हैं कि सर आपका 29 इयर्स का इतना पोस्ट डॉक्टरेट एक्सपीरियंस में आपके 77 पेपर ही क्यों आए. मैंने कहा यार ये इतना इजी नहीं कि हम ये पेपर में पब्लिश कर गए, क्योंकि मुझे बहुत सारे सैंपल लेने पड़ेंगे, मुझे आउटलाइन डिसाइड करना पड़ेगा. ओके, सो स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस इज बीइंग हैपनिंग. So set of procedure in which sample statistics are to be used. किसी ने क्या किया यार? वेट कर. Then next I am coming to the point that inferential statistics में दो थिंग आएगी. एक आएगा मेरा कॉन्फिडेंस इंटरवल. जो मैं स्टडी करता हूँ इसमें कितनी प्रोबेबिलिटी है कि मेरा डिसीजन रॉन्ग हो. इसको हम लोग नॉर्मल वे में कहते हैं नेवन ऑफ सिग्निफिकेंस. आप जब कहते हैं कि 5% नेवन ऑफ सिग्निफिकेंस है, इसका मीनिंग यह है कि मेरा 95% कॉन्फिडेंस है. सर इसको कॉन्फिडेंस इंटरवल, उसको कहते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल. देन वी कम टू द पॉइंट ऑफ द हाइपोथेसिस टेस्टिंग. Does hypothesis is being accepted or not? So if you see the graph, मैंने दो साइड पे हिट करना बताए हुए हैं. वो अपना रिजेक्शन एरिया है. जो हम लोग 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहते हैं, वो बेसिकली है नॉन हाइपोथेसिस. अभी 5% को जब मैं लेफ्ट टेन और राइट टेन में लेता हूं तो 2.5% लेफ्ट साइड, 2.5% राइट साइड, मीन्स आउटलाइनर्स. सो जब मेरा डिसीजन होता है तो 5% प्रोबेबल एरर है. बात समझिए, 5% प्रोबेबल एरर है कि मेरी हाइपोथेसिस से जो रिजल्ट आया है वो गलत हो सकता है. एक बात समझ लीजिए, कभी भी रिसर्च से ऐसा मत ऐसा रिसर्च है कि आई एम 100% नो. यू नो, हमारे एकेडमी में एक बहुत बड़ा फायदा है क्योंकि मैं इंडस्ट्री से हूँ. इंडस्ट्री में जब हम लोग सबको बात करते थे कि सर देयर टू अल्टरनेटिव, तो मैं सर थे डॉक्टर हुमी शेतना, हु वाज माय चेयरमैन,
वो कहते थे कि यार तेरा काम ही नहीं है इंडस्ट्री में, तू एकेडमी में भी चला था। एंड ही फोर्स मी टू डू द डॉक्टर। आप तो जानते होंगे डॉक्टर होमी सिन्हा का नाम, हमारे टाटा ग्रुप के वो डायरेक्टर थे और मेरी कंपनी के चेयरमैन थे व्हेन आई वाज वर्किंग इन टाटा। तो नो एक एकेडमिशियन के हिसाब से हम लोग वही कहते हैं कि 5% प्रोबेबिलिटी है कि मेरा आंसर गलत होगा, लेकिन जो मेडिकल डॉक्टर है वो 5% कहेगा तो लोग मायने आएंगे उसको। वो कहेगा 1% पॉसिबिलिटी है कि मेरा आंसर गलत होगा। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर टू। सो मैं थोड़ा आगे का भी ले आया हूं क्योंकि सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम लोग कहते हैं व्हाट इज योर जेंडर, नॉमिनल स्केल, रैंक द 5 ब्रांच, ऑर्डिनल स्केल, scale 1 to 5 means whether you like the most or not, that is interval scale, and how many times did you charge is going to be the ratio scale. And the sentence tendency, एक बात समझ लीजिए, जब आप कोई स्टडी कर रहे हैं साइकोलॉजी के ऊपर, एजुकेशन साइकोलॉजी के ऊपर, तो वो नॉमिनल एंड ऑर्डिनल स्केल होता है। सो वहां आपको आपके लिए मीन और इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है मोड, कि कितने कौन से नंबर के मार्क सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को आते हैं। A particular range you may say. जब कोई भी ब्रांड कंपनी होगी तो वो मीडियन लेगी कि बीच में कितने परसेंटेज लोग वो एक्सेप्ट करते हैं, और जब हम रेशियो और नॉमिनल पे आते हैं तो हम लोग मीन यूज कर सकते हैं। अभी जो हम लोग मैंने क्यों लिखा है कि मैंने काफी रिसर्च पेपर जो अपने इंडियन न्यू रिसर्चर्स के, बड़ी रिसर्चर्स के आते हैं, वो लोग रॉन्ग सिंबल यूज करते हैं। इसके कारण इंटरनेशनल जर्नल से पहले ही पेपर रिजेक्ट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप पॉपुलेशन भी बात करते हो तो आपको म्यू की साइन ये होनी चाहिए, सैंपल स्टैटिस्टिक्स में XY होगा, सिग्मा हम लोग यूज करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन में फॉर पॉपुलेशन, फॉर द सैंपल S यूज करना चाहिए, परसेंटेज के लिए पाई यूज करते हैं पॉपुलेशन में, या हम लोग P यूज करते हैं। एंड एक बात समझ, यहाँ इटानिक P नहीं है, इटानिक P इज यूज इन द स्टैटिस्टिक्स फॉर इंडिकेटिंग द न्यून ऑफ सिग्निफिकेंस। याद रखिए, लिख लीजिए, आपको लिखना है तो small p in the normal language is used in the sample statistics to indicate the percentage, but the italic p used in the statistical study indicates the level of significance. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेम वे बीटा के लिए बीटा यूज करते हैं पॉपुलेशन के लिए, और स्मॉल का नेतृत्व में हम लोग बी यूज करते हैं, इटानिक यूज नहीं करते हैं। वो बात समझ लीजिए। अभी ये पॉइंट के लिए एक यून है 68, 95, 99.9, बहुत इंपॉर्टेंट है। x by plus minus 1 standard deviation is equal to 68. X by plus minus 2 standard deviation is equal to 95. X by plus minus 3 standard deviation is equal to 99.9, जिसको मैंने यहाँ 100% कहा है। नाउ जो फ्रीक्वेंसी मिलती है, हमारा जो डेटा मिलता है, वो सिमेट्रिकल नहीं होगा। देखिए, जब आपने सैंपल से डेटा कनेक्ट किया तो आपका सैंपल डेटा कभी भी सिमेट्रिकल नहीं होगा,
एसिमेट्रिकल होगा और एक साइड पे स्क्यूड होगा। सुनो, जब हम लोग कोई भी, मैं थोड़ा एक्सपीरियंस मेरा वही दूंगा कि जब मेरे पास कोई थीसिस एक्सटर्नल रिव्यू के नहीं आती है, because from the 13 university in state of Gujarat, from India, I am getting the thesis for the evaluation. तो हम लोग पहले कहता है कि यदि पर्टिकुलर रिसर्च कॉर्नर ने कितने सैंपल्स लिए थे, इसमें से कितने आउटलाइन किए। रिसर्च पेपर में भी हम लोग वह कहते हैं। आप एक बात समझिए, जब भी कोई भी रिसर्च जर्नल ऐसा कहेगा कि आपका पेपर एक वीक में पब्लिश होगा, तो एक मान लीजिए कि आपका पेपर रिव्यू नहीं होगा प्रॉपर्ली। इसलिए जब आप वीकेंड में रिसर्च पेपर पब्लिकेशन के लिए देते हैं तो 6-6 महीने वेट करना पड़ता है, क्योंकि वहां के सब रिव्यू है वो पॉइंट को देखते हैं कि whether the outline is famous or not. Apart from sentence tendency, the dispersion, shade, skewness, and everything is going to be quite important. Now, so any data you prepare, any information you prepare for your research, for parametric test, very importantly for parametric test, it should have the highest level of validity and highest level of reliability. Then your paper will be published in the internationally known journal, Scopus journal. जब आप देखेंगे कि आपकी वैलिडिटी हाई है, रिलायबिलिटी लो है, तो वो अपने पीएचडी के रिसर्च कॉर्नर को जो पेपर पब्लिश करना पड़ता था, अब तो गवर्नमेंट ने वो रिमूव कर लिया, मिनिमम 2 पेपर टू बी पब्लिश और लाइक दैट। तभी लोग ये कहते थे, वैलिडिटी हाई रखते थे, रिलायबिलिटी कुछ नहीं रखते थे। सो उनके कंक्लूजन पे कुछ डिसीजन नहीं होता था गवर्नमेंट का, और रिसर्च फंड मिसयूज होता था। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। और कोई नियम पे ऐसा होता था कि रिलायबिलिटी हाई होती थी लेकिन उसकी वैलिडिटी नहीं होती थी, उसको वैलिड नहीं किया सकता था। तो भी वो रिसर्च कॉर्नर के पेपर फॉर पीएचडी स्टडी में चले जाते थे। यदि दोनों नो है तो पेपर डायरेक्ट नहीं रिजेक्ट हो जाता है, ओके, थीसिस भी रिजेक्ट हो जाता है। नाउ यदि अभी हम लोग आगे चलते हैं तो पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। Parametric strategic analysis always assume that means of the sample groups are normally distributed and assumptions of equal variance have been done by us. Equal variances are there between population and sample, and that is why we go on outline. Box plot that I'm coming later on after a few minutes. If these assumptions are not made, then it is non-parametric test. Normally, small sample size, when sample size less than equal to 30, it is advisable to use a non-parametric test, except the finance activity. Except finance and accounts activity. And that is why in finance and accounts, in a thesis, we used to say that you take 10 companies of the same industry and 10 years database. So we have the number of samples 100. Second thing, non-parametric test में minimum T, minimum 3, maximum 30, minimum 3 sample चाहिए। यदि आपके सैंपल 3 से कम है तो आप कोई भी स्टैटिस्टिकल टेस्ट नहीं कर सकते हो। ओके, आई थिंक यू गॉट द पॉइंट वेरी क्लियरली। मुझे करना है तो 300 वो चाहिए। मैंने कहा ना, फाइनेंस हमारी पॉपुलेशन साइज बहुत नेस होती है,
मानो कि मैं कहता हूँ कि मुझे कुछ फाइनेंशियल स्टडी करना है केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए, तो मैं कितनी कंपनियां होगी इंडिया में? रजिस्टर्ड कंपनी होगी से 200. नाउ ऑन 200 कंपनीज के डेटा में कनेक्ट करूंगा, तो यू नो द financial fraud system, accounting fraud system. There is no meaning for me to give any name at this moment because it's a political problem. But so such companies I have to remove. You know, one time I was doing my research and I found one of the company return on net worth was negative. Finally, I come across that there is a net worth was also being a negative. Company पूरी देवे पे चल नहीं थी, लोगों के पैसे पे चल गई थी, तो वो कंपनी को मैं नॉर्मल स्टडी भी नहीं दे सकता हूँ. आई थिंक पॉइंट इज क्लियर नाउ. सो आई हैव टू डिसाइड अकॉर्डिंग टू दैट. सो डिफरेंस बिटवीन द पैरामेट्रिक इज अ नॉर्मल एज्यूम्ड डिस्ट्रीब्यूशंस. नॉन पैरामेट्रिक तो कुछ भी कहता है कि पर्सन की बिहेवियर एक्स होगी, वाई होगी, जेड होगी. Assumed variance is homogeneous in the case of parametric. It may be homogeneous and heterogeneous in case of non-parametric. That's why I say that the atmosphere of the UP is going to be different than of the Gujarat. So crop may be different. Data set relationship may be independent, but here it may be anywhere. Use one center measure is a mean. Here it is median. The parametric test, a very important thing is that you can change. That's why I said you have to refer to the basic econometrics. You should learn about it. This is my personal request. That number of study, you can convert the independent into dependent, dependent into independent. You can remove some scale by using the structured equation model. अभी तो SPSS सब काम करके आपको दे देता है. So when sample size is less, see number of times students are same. मैं कॉलेज का एक्सपीरियंस किया हूँ, यूनिवर्सिटी का. कोई भी डिपार्टमेंट से लोग आते थे, लेकिन मुझे रिसर्च ही कहते हैं नो कि सर क्वेश्चन हो या कुछ तो आंसर मिलेगा. बहुत इंपॉर्टेंट है. टी टेस्ट एंड जेड टेस्ट दोनों की फॉर्मूला सेम है. स्टैटिस्टिक्स की बुक में देखिए, कोई भी बुक में देखिए. लेकिन जब आपकी सैंपल साइज 30 और लेस देन 30 है, तो उसको स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट कहा जाता है. जब सैंपल साइज लार्ज हो, जब सैंपल साइज लार्ज हो, तो हम लोग उसको जेड टेस्ट कहते हैं. तो मैंने कहा कि 3 से 30 चाहिए, 3 नंबर से 30 मिनिमम, 3 सैंपल and up to 30. Then it's covered under T test. If the calculated value of T is greater than n-1 degree of freedom, and never of significance, you are getting the Tabular value. Or nowadays the SPSS giving the critical value. Okay, SPSS name it as a critical value. So if the calculated value is greater, then you reject the null hypothesis. So you are rejecting the null hypothesis. It means that 2 samples are significantly different. Not say 100% different, significantly different. हम लोग academician हैं, हमको डॉक्टर की तरह काम करना है. डॉक्टर ऑपरेशन के पैसे इसलिए पहने लेता है, बाद में कहता है कि भगवान को प्रार्थना करो ऑपरेशन सक्सेसफुल. सही बात है ना, नॉर्मली. सो यहाँ ये पॉइंट है. यानी सैंपल वो तो मैंने कह दिया. ओके, उसका दूसरा भी एक तरीका है कैसे करना चाहिए. व्हेन सैंपल साइज इज नोस एंड इफ द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ पी, मैंने इतने पी लिखा है, देखिए आप,
is less than neon of significance, say 5%, means 0.05, then you eject the null hypothesis. So very important, टेबल वैल्यू जब आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू से हायर होती है तो नन हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करिए, जब पी वैल्यू लेस देन नेवन ऑफ सिग्निफिकेंस से है तो आप हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करिए। ये पॉइंट बहुत ध्यान रखना है। When sample size is large, we use the Z value. Same logic is applied. यदि मैं कैलकुलेटेड वैल्यू देता है तो मैं रिजेक्ट करूंगा नॉन हाइपोथेसिस एंड आई से ताकि मेरे दोनों सैंपल डिफर हुए हैं। लाइक मैं कहता हूं टेक्सटाइल कंपनी एंड केमिकल कंपनी, गुजरात में केमिकल कंपनी एज भी बॉट है, टेक्सटाइल कंपनी एज भी बॉट है, तो मैं वो दो की कंपैरिजन करूंगा कोई भी हिसाब से, हाउ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड द रिटर्न इज हैपन टू द शेयर होल्डर्स कम्युनिटी एट नाइट। तो वो टाइम पे मुझे ये देखना है। यहां भी ये रिपीट हो रहा है पी वैल्यू का कंसेप्ट, देन यू रिजेक्ट द हाइपोथेसिस। नाउ हाइपोथेसिस आर ऑफ डिफरेंट। नंबर 1 सिंपल हाइपोथेसिस, ये स्पेसिफाई वैल्यू डिफाइन करती है पीटी लाइक 0.05। नॉन हाइपोथेसिस इज ऑलवेज सिंपल हाइपोथेसिस stated as an equality specifying exact value of the parameters. Like mu is equal to mu is 30, like something you can say. That's I'm coming. Then I come to the composite hypothesis. That is known as alternative hypothesis. बहुत ही सिंपल है, से नो कंफ्यूज हो जाते हैं। सिंपल हाइपोथेसिस नॉन हाइपोथेसिस है। कंपोजिट हाइपोथेसिस में हम लोग कहते हैं लेस देन, मोर देन और नॉट इक्वल टू। तीन चीज है। मुझे मालूम नहीं है कि पर्टिकुलर मेरा इंडिया का या गुजरात का या अहमदाबाद सिटी का या पर्टिकुलर एरिया का पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है और एबो पॉवर्टी लाइन है, मुझे मालूम नहीं है, तो मैं नॉट इक्वल टू करूंगा। और मैं स्टडी कराया हूं कि कितने परसेंटेज लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है। सो अभी आप समझिए, तो जब मैं लेस देन मोर देन कहता हूं तो वो मेरा 210 टेस्ट कहा जाता है दोनों साइड। आपने देखा ना, वो हमने आगे देखा है कि वो जो हमने नॉर्मल का किया लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे हमने वो बता दिया हेड नाइट, तो वो होता है लेस देन और मोर देन। Test statistics, I already say Z distribution to be used for large sample and T distribution for small sample. I just repeated it because it is a very important point. Level of significance, which is being named as an alpha, and that is the alpha is very important to understand. And as I already said that there is a 5% chances that I have rejected the correct non-hypothesis. I rejected the correct non-hypothesis. Confidence coefficient. I will tell you one thing. मेरे पास इतने रिसर्च पेपर फाइनेंस अकाउंट्स के, nowadays एग्रीकल्चर के भी बहुत आते हैं, एजुकेशन का डिपार्टमेंट के आते हैं, तो कोई भी लोग कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट पे बात करते हैं। See, the confidence coefficient is nothing. It's a beta. In simple words, when we come here, it's a 1 minus alpha. So 95% is confidence level. Power of test is always being depends on the confidence level. But हम लोग thesis में लिखते हैं, रिसर्च पेपर में लिखते हैं 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस विद 95% कॉन्फिडेंस लेवल। क्रिटिकल नेचर, सो हमने जो आगे ग्राफ में देखा कि नॉर्मल कर्व था, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड पे मैंने रेड करना बताया था। सो दैट इज नोन एज टू रीजन्स एंड इसको कहते हैं क्रिटिकल रीजन, क्रिटिकल
And that is why in the SPSS, very important point, it is known as critical value. अभी देखिए SPSS में क्यों critical value कहते हैं, काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. रीजन ये है कि ये अपने प्रोबेबिलिटी कर्व से उसको डिफाइन करता है. Now region of rejection when non hypothesis is rejected, and बीच का जो पार्ट है region of acceptance. One time test, I already said, left and right side. But only last one point I mentioned in the first bullet point, alpha upon 2. What it means? That when I say the 5% level of significance, और मैं 2-3 पे टेस्ट करने वाला हूँ, तो एक साइड पे 2.5% आएगा, लेफ्ट साइड पे 2.5% आएगा, राइट साइड पे 2.5% आएगा. I think it's clear to every one of you. तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप क्या कहना चाहते हैं. मानो कि हम लोग कहेंगे कि with all due respect to our politicians, how many politicians are 10 standard pass, or they are having a less than, sorry, education less than 10 standard. तो हम लोग लेफ्ट हैंड ले लिया. So वहां हमको दोनों रखना पड़ेगा कि how many politicians are less than 10 standard pass, how many politicians are graduate. Left hand, right hand. I'm just giving by way of example, okay? So don't take that it is applicable to our India, but it's a general understanding what we do as a researcher. So we put it on the left hand or the right hand. मैंने पूरा लिखा हुआ है properly. 210 tests which are not equal to, वो भी same आएगा. Alpha upon 2 guys for that. Alpha upon 2 means 5 upon 2 means 2.5 divided by 100 means 0.025. Level of significance हम लोग परसेंटेज में बताते हैं. जब उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में लिखते हैं तो पॉइंट उसको डिवाइड बाय 100 करके लिखते हैं. यदि हमने उसको डिवाइड बाय 100 नहीं किया तो वो एक्सेप्टेड नहीं है. सो यहां मैंने कहा 110 टेस्ट मैं खाली देखा हूं कि मैं कितने पॉलिटिशियंस 10 स्टैंडर्ड पास नहीं है, तो लेफ्ट साइड पे होगा. सो मैं कहूंगा कि 95% नो, ये कॉन्फिडेंस से बना गया. एक्सेप्टेंस रीजन 210 टेस्ट 2.5 2.5 बोथ साइड एंड राइट साइड 2.5, क्योंकि हमको काफी बार वोट करना पड़ता है. सो क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द सिग्निफिकेंस इज बेसिकली कमिंग on the level of significance which is known as alpha in the alternative hypothesis. Decision given for the hypothesis by comparing the critical value and calculated value, we get the answer that is just Z value. Same logic we are applying here. So if the calculated Z value is higher, we can reject the HO. Parametric and non-parametric. Now parametric test in statistics. It is a kind of hypothesis which gives generalization for generating the records regarding the mean of primary and original population. The t-test is carried out based on students' t-statistics theory, and it is very, very famous in the case of nominal and ordinal scale. Sorry, in the ratio and interval scale, I made a mistake. Non-parametric test does not require any population distribution, which is meant by distinct parameters. मेरी स्कूल का, मेरी यूनिवर्सिटी का, मेरी MBA डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ काफी डिफर हो सकता है. Punishment given and everything. So, non-parametric test is based on difference on the
median. So this kind of test is known as distribution fee test. So non-parametric test is a what you can say, distribution fee test. Next is coming that key difference, assumptions, mean value, median value. Now very important, कोरिलेशन में क्या करना है, पैरामेट्रिक में पियर्सन को यूज करना है, नॉन पैरामेट्रिक में स्पीयरमैन को यूज करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पैरामेट्रिक में नॉर्मल होती है, नॉन पैरामेट्रिक में हम लोग आईबीटी लेते हैं, पॉपुलेशन नॉलेज इज रिक्वायर्ड, क्योंकि हम लोग कहेंगे कि टेक्सटाइल कंपनी जो है वो 15% रिटर्न देती है, ऐसा नॉर्मल माइंड में सेट हुआ, तो उसको पॉपुलेशन का नॉलेज कहते हैं। नॉन पैरामेट्रिक में कुछ मालूम ही नहीं है कि पर्सन की बिहेवियर क्या होगी। सो इंटरवन डेटा में हम लोग पैरामेट्रिक टेस्ट करेंगे, नॉमिनल डेटा में हम लोग नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट करेंगे। पैरामेट्रिक में ओनली वेरिएबल्स आते हैं, नॉन पैरामेट्रिक्स में एट्रीब्यूट्स एंड वेरिएबल दोनों आते हैं। नायिका हम लोग एक एग्जांपल देते हैं कि एंगर नेवर, सो एंगर नेवर इज अ वेरिएबल, अभी उसके एट्रीब्यूट्स दो आएंगे, सॉरी एट्रीब्यूट्स होगा एंगर नेवर, उसके दो वेरिएबल आएंगे, मैन फीमेल, मैन में एंगीनेस ज्यादा है कि फीमेल में ज्यादा है। आई थिंक यू गॉट इट पॉइंट। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम लोग पैरामेट्रिक में जेड टेस्ट टी टेस्ट करते हैं, वही टेस्ट को नाम दिया गया है नॉन पैरामेट्रिक्स में क्वेश्चन वेरिएशन मैन। सो डोंट वरी अबाउट इट, नाम अलग है, मेथोडोलॉजी से। चाइस का टेस्ट वेरी फेमस। सो एक बार हम लोग ने डिसाइड किया कि मेरा डेटा हो गया है, तो सबसे पहले मैं टेस्ट करूंगा चाइस का टेस्ट टू जज दैट माय सैंपल डेटा हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन। नहीं, हम लोग कहते हैं कि पर्टिकुलर सिटी में वाटर बॉर्न डिसीज कितने % दे देते हैं, तो हमको वाटर बॉर्न डिसीज एरिया ही लेना पड़ेगा। सो सैंपलिंग फ्रेम वो लेके इसमें से सैंपल सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो चॉइस कैसे होगा? सो एंड चॉइस के को हम लोग नॉन पैरामेट्रिक में भी यूज कर सकते हैं। To decide yes Sanjay sir, सर अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को प्रवेश सर। परेश सर अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, अनम्यूट। ओके, अच्छा, नाउ इट्स ओके। यस हाँ सर, पॉइंट इज दैट कि ये जो चॉइस के हैं, जब हम इसको पैरामेट्रिक टेस्ट में भी लेते हैं तो क्या कहते हैं कि हमने जो सैंपल लिए वो पॉपुलेशन से लिए हैं। जब हम लोग सेकंड साइड पे आते हैं नॉन पैरामेट्रिक्स में, तो हम लोग एक्टिविटीज की रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाइक आई से एंग्रीनेस among the person resulted into divorce. This is by way of the job. But there are two activities.
Does the angriness affect the divorce or not? You can say, secondly, that divorce can be happen on account of angriness. Anyway, you can do it. दिखाई दिया. चलो. Now coin. So वो हिसाब से हम लोग कोइनेशन डिसाइड कर लेते हैं. So कोइनेशन में हम लोगों को स्पेसिफिकली कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आती है. वो कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप does not indicate that one way it is correct, one way it is not correct. Like angriness may result into divorce, but divorce may not be only on account of the angriness. So, वहाँ हम लोग probable error count करते हैं. So, when observed value of I is going to be depends on the condition of random sample. So, this is the last point, that if the I is less than probable error, which is calculated by the action set, which is also being calculated by the SPSS, Matnav and everyone. If it is less, I calculated value is less than that, then I is not significant. It means that यहाँ आपका research stop हो जाएगा. मैं यहाँ आगे research नहीं कर सकता. If the I is greater than 6 PE, वो हम लोग normally ऐसा करते हैं international. 6 times probable error, then I is significant. So मैं आगे के बाकी के सब टेस्ट मैं कर सकता हूँ. So वो coordination, establishing the relationship is going to be give you the very good idea that the way you should work it. वहाँ आएगा एक important point, and that's basically known as the coefficient of determination. So coefficient of determination is basically the I square. जब हम लोग सोते आय का कोइनेशन का स्क्वायर निकालते हैं, यदि वो, but very important point, the coefficient of determinations can be between 0 to 1. It is being taken as a modular basis. It may be plus or minus also. But there हम लोग कहेंगे relationship between x and y. और second side पे हम लोग कहेंगे relationship between y and x. So एक बार हम लोग dependent को independent बनाएंगे, second time हम लोग independent को dependent बनाएंगे. वो होगा तो ही आप रिग्रेशन एनालिसिस और वो सब आगे सब कुछ कर सकते हो. और मैंने वहाँ फॉर्मूलाज भी दी हुई है. एंड काफी बार हमारी रैंडम वैल्यू 0 आ जाएगी तो थोड़ा स्टॉप होना है कि कहीं मेरा डेटाबेस तो गलत नहीं है ना. यदि मेरा डेटाबेस गलत होगा. So this is the bibliography I have used in this presentation. Here now I am making the ground open for the question and answer. The bibliography is basically indicating that I have studied so much material in my preparation for today's session of the CTPD. जैसे मैंने अगले भी अटेंडेंस किए थे तो मुझे मालूम था कि कौन से नियम पे कैसे मुझे एडजस्ट करना है. और मैंने वो भी मार्क किया है कि काफी पार्टिसिपेंट्स रेगुलर नहीं थे. बीच में से एक दो गड़बड़ी करनी गुम हो गए क्योंकि पैसा नहीं दिया है. So see, the very important thing is that when they get a few of course, they are not sincere. But if you charge something, they will sincerely attend it. देखिएगा 10 दिन का आपने मेहनत किया. मैंने देखा है संजय साहब को तो मालूम है कि काफी सेशन मैंने अटेंड किए हुए हैं. सो मेरा एक माइंड क्लियर हो गया था कि अपने पार्टिसिपेंट कैसे हैं. Sorry to tell you, but it is fact. Now, sir, I am opening it for the question and answer.
Now वो क्या नाम था उनका, मैं भूल गया। डॉक्टर श्वेता। श्वेता डॉक्टर श्वेता लीड द सेशन। डॉक्टर श्वेता, मैं नाम भूल जाता हूँ काफी। Thank you so much, sir. A very thought-provoking and I must say a very detailed session by you, Professor Shah. So you can say that it's a very boring session. No, actually very interesting with lots of insights that you have shared, and especially relating to the field of conducting research. जो young researchers हैं, teachers हैं, हमने बहुत कुछ सीखा आपके session. हम लोग तो बहुत बुद्धे हो चुके हैं, अभी आपको समझाने का है। जी sir. So I will just quickly provide a snapshot of today's session. थोड़े से key points हैं. So during the session, Professor Shah, you have explained about the meaning of statistics and the common principles and methods that have been developed for handling the numerical data. You have also enlightened us and presented the basic steps of compilation and analysis as data preparation, describing the data, which was the descriptive statistics, and hypothesis testing and model, which was the inferential statistics. You have also provided a systematic analysis as to how to describe a data and the correct way to select the samples. That was very good for us. We have learned a lot. You have very well echoed the nuances of all the 4 levels of scales of measurement with a special focus on interval and ratio scale. Also, a clear-cut distinction was made by you between the parametric test and the non-parametric test based on their inherent properties. So I must say a detailed analysis of test statistics involving t-test and z-test was made. You also gave examples for correlation and how we do for the regression and fitting of the regression line, and the hypothesis testing involved, along with conditions under which these can be applied. So in a nutshell, a very fruitful session loaded with numerous examples and numerous case studies that made your session very interactive, lively, and which was very easy for us to comprehend and assimilate. So thank you so much, sir. Just a few lines about our organization. CTPD is a trust and it is a permanent body. It is a professional organization which is very unique in its own way, and it is working in the field of empowerment of teaching community. Our CTPD is a family of young, energetic, dedicated, and coordinated members who have been blessed by experienced dignitaries and resourceful persons, creating an ecosystem of learning, growing, and excelling in the field of teacher empowerment. So now proceeding ahead, now may I request Professor Satyendra Gupta, sir, the Chief Advisor of Council for Teachers Professional Development, to quickly share his valuable insights for today's deliberation. Professor Satyendra Gupta, sir, please, sir. Over to you. Okay. Satyendra Gupta, sir, not seen here. बात हुई थी, आपकी नजर नहीं आ रही। क्वेश्चन आंसर सेशन अभी कर सकते हैं, अगर बीच में आ जाते तो देख लीजिए। ठीक है सर, we can move ahead with the question answer session as well. Yes. Now any question? I already given it in the beginning. My email ID and everything. Second thing, so they can raise their hands. You can go to my YouTube channel also. You will find out something. If you want to ask any question, you can please unmute yourself. You can raise your hands, and I'll be taking the questions on your part. परेश सर, तब तक ये पार्टिसिपेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। एक क्वेश्चन मेरा था कि कई बार मैं ये देखता हूँ 5 पॉइंट रेटिंग स्केल में जो डेटा है कई बार ऑर्डिनल स्केल पर होता है और कई बार उसको कोशिश की जाती है इंटरवल स्केल पर बनाने की, जब हम उसे नंबर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। See, in that particular case, you have to come to the point of the attributes and the variable. And by establishing the relationship between the two, you have to go to the Mann-Whitney test. There is in my bibliography, I have given the name of the one book of the Gopan Kaji, 100 Statistical Test, which is my favorite book. I have already given it in the name of bibliography. मैं क्वेश्चन को थोड़ा और क्लैरिफाई कर दूं आपको। सपोज कीजिए 5 पॉइंट रेटिंग स्केल पर मैंने कोई चीज वेरी गुड, गुड एवरेज, बिलो एवरेज और वेरी पुअर इस तरह से हो गया। उसी को कई बार मैंने देखा क्वेश्चन में कि लोग ना नंबर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं 5 4 3 2 1।
ओके। और फिर जब वो डेटा कलेक्ट होता है उन नंबर्स में 5 4 3 2 1, तो फिर नॉर्मली जो पैरामेट्रिक टेस्ट है उस पर अप्लाई करते हैं, और कहीं ना कहीं रिजल्ट भी फाइंड आउट करते हैं उनके बेसिस पे। तो ये कितना सही है, मैं ये जानना चाह रहा था। Sure, okay. The point is that number one, जब भी हम लोग निकट स्कैन यूज करते हैं, 1 indicates the lowest value, 5 indicates the highest value. नंबर 2, यदि वहीं आपने इंटरवन स्कैन पे डेटा कनेक्ट किया है, तो वो पर्टिकुलर क्वेश्चन को सेपरेट आउट करना पड़ेगा। मीन्स क्वेश्चन इज गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू 2 to 3 पार्ट्स। सो क्या होता है कि इससे वो एक पूरे नए एक्टिविटीज आपको निकालने पड़ते हैं। एक होता है कि कौन सी इंडस्ट्री में है, क्या है, कहीं आता है कि कितना इनकम होता है इंडिविजुअल का, तो हम लोग उसको ग्रुप में बनाते हैं कि एनुअल इनकम नेशनल रुपीज 1 लाख पर एनम। कुछ उस तरह का, जो जैसे कोई भी एब्स्ट्रैक्ट हमने ले लिया जिसको सेटिस्फेक्शन लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, उसको जब सेटिस्फेक्शन लेवल पूछते हैं तो सेटिस्फेक्शन लेवल को कई बार वर्ड्स में ना करके जब नंबर्स में ले लेते हैं, तब पैरामेट्रिक टेस्ट तो वो कहाँ तक ठीक है, मैं वो जानना चाहूँ। मैं कहता हूँ नंबर्स को आपके लिए डेटा कोडिंग के लिए यूज करना है। जब हम लोग क्वेश्चन भरवाने के लिए देते हैं, तो हमको उसको सिंपल वर्ड्स में लिखना चाहिए। मानो कि हिंदी में हम कहेंगे कि अच्छा सबसे खाया हुआ है, सबसे अच्छा है, चलेगा, लाइक दैट, सोचना पड़ेगा, ऐसे कुछ करते आप। और वो जो कोडिंग होता है ना, वो आपके लिए होता है। इसलिए मैंने वो कहा कि पहले हम लोग डेटा कनेक्ट करते हैं, इसलिए मैंने कहा कि नीचे से जाइए, आपका डेटा कोडिंग का स्टेप्स है नीचे। बाद में आपके जो क्वेश्चन है उसको आप 1 2 3 4 5 कहेंगे तो लोग समझेंगे नहीं। मानो कि मैं गुजरात में बैठा हूँ और एग्रीकल्चर में मैं कुछ फार्मर से बात कर रहा हूँ, तो फार्मर को ये बुद्धि नहीं आएगी कि 5 का मीनिंग क्या है, 1 का मीनिंग क्या है। मेरे फार्मर कहेंगे कि क्या सब बात करते हो, 5 नंबर कैसे अच्छा हो सकता है। मेन अटके का 5वां नंबर क्लास में आया तो वो तो खाया भाई, स्कूल में पहला नंबर आया क्लास में तो अच्छा है। हम जब रिसर्च देखते हैं तो 5 नंबर को हायर वैल्यू देने की है। तो मैं नॉमिनल और ऑर्डिनल स्कैन, कोई भी स्कैन के लिए, और कोई भी इन केस ऑफ इंटरवन रेशियो जो मैं डेटा कनेक्ट करता हूँ, तो उसका स्ट्रक्चर मुझे नॉर्मल वे पे बनाना चाहिए। 2 बात बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा कनेक्शन, डेटा एनालिसिस, ये 2 के बीच में आता है डेटा कोडिंग। डेटा कोडिंग इज योर इंटरनल पर्पज। मैं नॉर्मली रिसर्च करता हूँ तो हर एक रिसर्च पेपर के लिए डायरी बना के रखता हूँ, और इसमें लिख लेता हूँ कि ये क्वेश्चन में जो है वहां डेटा कोडिंग में कैसे कराया हूँ। मैं कंप्यूटर में तो जानता हूँ, लेकिन मैं डायरी में रखता हूँ, क्योंकि कंप्यूटर का भरोसा नहीं, कभी कुछ हो गया तो क्या करूंगा मैं। बिल्कुल सर, वो आपको ध्यान रखना। यस, आई थिंक यू आर बीइंग गेटिंग एग्रीड विथ मी। आपका क्वेश्चन है हमेशा यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। वो आपकी जो सैंपलिंग फिल्म के पब्लिक का जो नॉलेज है, सैंपलिंग फिल्म, वो मैंने बताया ना, यूपी स्टेट के 3 तहसील, 3 या 4 तहसील, तो उसको सैंपलिंग फिल्म कहते हैं। वहां लोगों की जो लैंग्वेज हो, वो लैंग्वेज में मुझे क्वेश्चन बनानी चाहिए। बाद में जब मुझे पब्लिश करना है तो मैं उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करता हूँ, और बीच में मेरा डेटा कोडिंग आके डेटा एनालिसिस होता है। सो मेरे रिसर्च पेपर में मुझे डेटा कोडिंग 4-5 लाइन में लिख लेना चाहिए। Correct? Yes, any other question? Sir, I have a question. May I? Yes, definitely, madam. Sir, like basically जब भी हम पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के बीच में डिस्टिंक्शन करते हैं, तो जो इम्पोर्टेंट चीजें माइंड में आती हैं, जो हम अंडर ग्रेड्स लेवल पे बच्चों को समझाते हैं, the basic parameters that is being used, which is the mean and the standard deviation. Yes. तो नॉन पैरामेट्रिक में ऑब्वियस बात है वो नहीं रहता है। Now हम मीडियन और मोड लेंगे। जी सर, वो मैंने बताया।
नाउ सीइंग टुडेज सेशन, जो काई स्क्वायर मेथड आपने डिस्कस किया, उसको अभी तक हम लोग एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के कंटेक्स्ट में ही जानते थे और समझते थे, जहां पे हम लोग कंटिंजेंसी टेस्ट एंड गुडनेस ऑफ फिट या टेस्ट ऑफ एसोसिएशन के फॉर्म में उसको डिस्कस करते हैं. So do you think एक स्लाइड था जिसमें chi square as a parametric test का डिस्कशन आया था? So how do we move ahead with this concept? See, normally in on good research papers, in parametric test also we are taking the chi square in the beginning with a specific intention that we should know that whatever population beneath was there, that is expected value and the observed value. क्योंकि जो वो मेरे ख्याल में नहीं आता है तब तक मैं उसको आउटलायर में नहीं लेके जा सकता. यदि मैं काई स्क्वायर में, क्योंकि काई स्क्वायर तो कोई भी जगह पे यूज हो सकता है, कोई भी सैंपल साइज पे यूज हो सकता है, मेथोडोलॉजी सेम है, बट एक फंडामेंटल पॉइंट है. लोग क्या कहते हैं कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर जाके तुरंत आगे का रिसर्च पेपर बना देते हैं. और वहीं क्या होता है कि आप आपने देखा होगा अपने स्टडी में भी काफी बार यदि आपने पैरामेट्रिक टेस्ट किया तो बहुत सारी मेहनत करने के बाद आपको कॉन्ट्राडिक्टरी रीजन मिलते हैं. एक टेस्ट मानो कि जेड टेस्ट आपको एक्स आंसर देता है, एफ टेस्ट आपको डिफरेंट आंसर देता है. आपने देखा होगा, बाद में आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा करना है. यदि अपने रिसर्च कॉर्नर के नहीं है तो हम लोग कोई भी हिसाब से भेज देते हैं, क्योंकि वहां तो कंडीशन फुलफिल करने की थी पहले, अब तो वो नहीं यही कंडीशन. या कोई बार हम लोग खाली वन ऑफ द माय रिसर्च कॉर्नर आई नो बहुत सारे पेपर कहीं ना उसका पीएचडी होगा, बाद में उसके तो अभी तक 100 पेपर्स बाहर आ चुके हैं 6 साल में, 6 years में. मैंने अभी आया था कॉलेज में मिलने तो मैंने कहा यार यू आर ग्रेट पर्सन, मेरा सारा 29 years में 77 ही पेपर्स आए, सो यू हैव द बेटर कैपेसिटी. बट व्हेन आई सी द 100 पेपर्स, एक भी पेपर पीयर रिव्यू जर्नल में नहीं था, सब पेज जर्नल में थे. 7 दिन में पेपर पब्लिश हो गया था. सो समझा कि chi-square is basically the fundamental test. I say it's my fundamental test. यदि वो मेरा फंडामेंटल क्लियर नहीं करता है तो मैं आगे काम नहीं करने वाला, क्योंकि वो मेरे डेटा की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी फिक्स करता है. अनदर मैं कहूंगा कॉन्वेंस अल्फा. यदि मैं स्टैटिस्टिकल जो सैंपल को मैं ले रहा हूं, यदि उसके कॉन्वेंस अल्फा वैल्यू मोर देन 0.7 नहीं होती है तो मैं देखूंगा कि मेरे सैंपल में कुछ प्रॉब्लम है. बहुत मेहनत करके या मेरा कंप्यूटर काम नहीं करेगा, मुझे मैन्युअली काम करना पड़ता है. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कौन से में सैंपल आउटलाइनर हो सकते हैं, वो सैंपल को आउटलाइनर करके मैं डिसाइड करूंगा. इसलिए मैंने कहा कि आपको नियरली 500 to 600 सैंपल लेके थीआई में, सॉरी थीसिस में, और 400 सैंपल को रिपोर्ट करना चाहिए. आई थिंक यू गॉट द पॉइंट. यदि साथ में मेरा कॉन्वेंस अल्फा नहीं आया तो मुझे बहुत सोचना पड़ेगा कि मैं मरने वाला हूँ आज. करेक्ट? श्योर. नेक्स्ट वन. Okay, sir. Thank you. Do we have any more questions from the participants? Sanjay sir, should I move ahead? I don't think. Yes, ma'am. Professor Satyendra Gupta sir, he is available. वो मुझे दिख रहे हैं. Yes. Professor Satyendra Gupta sir, he is the Chief Advisor of Council for Teachers Professional Development, and I'll request you, sir, to kindly share your valuable insights for today's deliberation. Thank you, ma'am. Pranam sir. Pranam. Thanks for giving your whole life experience regarding the research in just 1.5 hour to all the participants and especially for us. So definitely research is a very depth
analysis is required, very big and depth work is required to be understand, especially understanding the concept. So today we are feeling privileged and happy to listen to you, heard about you, but today see in the session and learn, and the very practical examples you quoted here, and very good thought you gave that we should do whenever we prepare the questionnaire or our research tool. So that should be learner centered, or the person, those who are in target to collect the data. After that, we should do the coding and analysis as per our requirement. So I think this is the big learning for the beginners, especially the person, those who are using or those who prepare the tool. Because this is the basic thing, we prepare the question which we understand. As per my understanding, I prepare the question whether in which language we are using. But when we give that questionnaire to the person, those who are supposed to fill the data, then they are unable, or they same question, they interpret in a different way. So then students or researchers tell that's the right answer or right options they are not giving. I hope they have not understood the meaning of the question. So basic problem, just to strike at the basic problem. This problem is that हमें उसी भाषा में बात करनी चाहिए जिस भाषा को वो समझते हैं. Then after that, technically you convert the data and the coding like that, ranking 5, 4, 3, 2, 1 or 0 or 7, whatever the scale you are preparing, then you write the terms as what they can understood, then convert it. So this is a very practical aspect you quoted, and throughout the session you described the whole thing about the research from very basic definition of the research you started. So I hope for the beginners or the experts, your session will remain useful. And because we are living in the online session, and so your session is also available on the YouTube. So whatever the concept is not clear to our participant, I hope then they will go through your recorded version. And then in future also we can connect with you for the further explanation. Sure, sir. Definitely, it's my privilege. Thank you, Jaimabu. Thank you for giving the time to CTPD. Sure. We are feeling it's my pleasure to do it, because the moment I involve, I finish something to be done for young generation. This is our small efforts to do the work for the all. Right. So many new researchers are added in this group. Previously, I used to come to Delhi much, but since last 4 years, I didn't come to Delhi. Normally, Noida is my place where I used to come much. Okay, sir. So whenever you come, because on 3 institutions are there to whom I am being associated. That is Chartered Accountancy, Cost Accountancy. Yes. Okay. So both headquarters are there in Delhi and NCR. On 3 of the quarters, in the same night. So I meet the own people and complete their work by staying there for 15 to 20 days, one by one. I complete the work. Now I may be coming, then I may be saying to the Sanjay sir, and so I may put a hing and we may talk to someone personally. Definitely. Thank you very much for giving me the chance, sir. Satyendra Gupta, sir. Nice for your good boy. We are obliged, sir. I have not made any PR statement, and I try to keep myself away from some disputed query. सर एक मिनट रुकिएगा, भी एक ग्रुप फोटोग्राफ हो जाए सभी के साथ. कुछ लोग वीडियो अपना ऑन कर लें. काफी लोगों ने नहीं किया हुआ लगता है मुझे. अभी करेंगे सर, अभी हमने अनाउंसमेंट भी नहीं किया था, हम जानबूझ के लास्ट में करते हैं क्योंकि फिर नहीं सर थोड़ा सेशन कंटिन्यू कर ले. तान्या मैम को भी इनवाइट करना है. And that is the Dr. Sanjay, I said that because when they get a fee of course, it does not have the venue of the work. This is what as a Gujarati I believe. You know, we Gujarati are purely considered as a businessman. You know? Thank you so much, Satya. Before that, I have opened my institute and NNP have been established. Okay? Okay. You know, that is your business criteria. Sanjay sir, should I continue?
Wait, Harsha मैम क्या कहना चाह रहे हैं? There is a question from Harsha ji here. Harsha मैम अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अनम्यूट मैडम, अनम्यूट कीजिए मैम. Harsha ma'am, please unmute yourself. She is not unmuting moment. Yes. Okay. Just to say, Paresh, very nice. It is very comprehensive, but Gujarat, not only Gujarati men, say Gujarati persons. So ladies are also business persons. Sorry, it was my error, okay? But I normally say that it's attitude. Okay? Yeah, just I am joking. This is a Gujarati attributes, okay? Let me put it in that way. But very important thing is that whatever you do for the society. Exactly. You know, in my community also, I'm the first cost accountant, first PhD, first international author. So सब लोग मुझे वही कहते हैं कि ये आदमी तो पागल है क्या करता है शायद मालूम ही नहीं होता है. हमारे में पंटू जी कहते हैं, हमको पंटू जी कहते हैं गुजराती में. ये आदमी तो पंटू जी है यार, जाके बोल के आता है क्लास में और पैसा खाता है, लेकिन समझते नहीं है कि कितना मेहनत करता है पैसे बोलने के लिए. Exactly. बिल्कुल सही कह रहे हैं सर. Sure, sir. Thank you. Ji sir. So now I would invite Dr. Jugnu Khattar Bhatia ma'am, my co-host for today and the Secretary General of Council for Teachers Professional Development, to kindly invite Professor Tanya Gupta ma'am to share her expert comments for today's session and to proceed with the formal vote of thanks. Jugnu ma'am, over to you. Yes, ma'am. Thank you so much, Dr. Shweta. Am I audible? Yes. Yes, ma'am. Yes, you are audible. Thank you so much. And it was such a wonderful session. And before proposing the vote of thanks, I would like to invite Professor Tanya Gupta ma'am to say a few words. Thank you, Dr. Jugnu. Thank you, Dr. Shweta. Jointly, you've conducted this program so wonderfully. Professor Paresh ji, namaskar. Thank you so much. You were constantly voting. हाँ जी, इनसाइट्स तो मैं क्या दूंगी, आप बहुत सीनियर हैं, उम्र में भी बहुत सीनियर हैं और एक्सपीरियंस में और एकेडमिक्स में भी बहुत सीनियर हैं, तो मुझे नहीं लगता मेरा कोई ऐसा हक है कि मैं इनसाइट्स दे पाऊं. बट हाँ, एक इनसाइट जरूर है अभी ज्यादा मत कहना. कम ही बोलूंगी सर. मुझे पहले ही कहा गया कि कम बोलना है, तो कम ही बोलूंगी सर. शॉर्ट में और सारांश में एक ही बात कि you know, whatever is your experience as an academician and as a researcher, it was evident through this session, especially, you know, when we are talking about statistics, how it is so important to convert data into useful information in a scientific manner. You have in this 1.5 hour session, as very rightly said by Professor Satyendra Gupta sir, you know, you've just tried to go deep down into the ocean of statistics, parametric, non-parametric tests, and also specifically about the scales, the ordinal and the, you know, the nominal scales that you have discussed. So I think it was well justified with examples. Though this is something one area which, you know, requires number of sessions if we have to go too much in detail. Definitely. But through your examples, your explanation, your experience as a researcher and as a supervisor was evident. Lots to learn, and I have you know, enjoyed being a part of the session. I just have, sir, one you know, request. Firstly, I mean, you've been here with CTPD India you are a part of us, and there is a time when, you know, we have to all start thinking beyond money and thinking how we have to serve the society. I'm sure आप इसको बहुत समय से कर रहे हैं और इस platform से आपने आज किया. So thank you for that. I feel, you know, what we require, all of us as researchers, we are all students of research. None of us is completely competent in it. The spark and the main thing is, what I see is that when one is making a hypothesis or creating a line of hypothesis, the ability or the research acumen of a researcher is when the person is making a hypothesis and has
is able to devise a design, and from the design is able to say what kind of statistical treatment can be used. This is missing in almost, if I say broadly, it's about 85 to 90% researchers, by just seeing the hypothesis or by seeing the design, cannot decide what will be the way for a quantitative analysis. I think, and that is why research statistics, whether descriptive or you talk about any kind of tests, are as scary as basic mathematics in a school, if I relate it. So my only point is that we all of us have to maybe through these sessions, or we will request you also to sir, keep taking more and more sessions, and we can, through such platforms like we have Research Circle. The idea is, because when we are empowering teachers, all teachers are by virtue not only teachers, they are researchers as well, whether they are in school or they are in university system. And we cannot come out to meaningful interpretation of results if we do not know how to analyze data properly. So, and research statistics is very important. And most of the teachers are scared of using quantitative analysis. This is a big scare. कि ये data कैसे analyze होगा. Generally, the supervisor or people now, things are so commercial and marketized that you just go down to the market and get your data analyzed within seconds. But I remember the times when people were actually doing these calculations and using these statistics in their times when such packages were not available. They were doing it so well. And this shows in your experience. Today, one may make 50 hypotheses and come with some kind of interpretation through at significance level. But if you ask them very basic questions on how it is being done, people fail there. It's because they have not done it. So I think the true test of a success of a researcher is that the researcher can, the moment the hypothesis is made and the design is made, the person gets an insight, mujhe ye statistical technique lagani. If we can have this kind of achievement in all of us, I think it is going to be a worthwhile exercise. But thank you so much. I've learned a lot from you, sir. And thank you so much, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you so much, Tanya ma'am, for your inputs. And moving towards the end, once again, a lovely and warm morning to our most valued and worthy resource person and CTPD founder trustees and CTPD India members, SDRF members, and our dear participants. I feel honored and privileged to get the opportunity to propose a vote of thanks on the session 7 of this FDP. As all the good things come to an end in life, so is the 7th session of this FDP. But we are looking more forward towards this type of session. And at the outset, I convey deep regards and the hearty thanks to our expert speaker and source person, Professor Paresh Shahji. We are really enlightened with your knowledge and presence. Thank you so much, sir. I would like to express our deep gratitude and appreciation towards Dr. Sanjay Kumar, who is the president of CTPD India and the program director SDRF. Thank you so much, sir, for your constant guidance and support on each and every step. I also thank our respected professor, Dr. Satyendra Gupta, sir, Chief Advisor, CTPD India, for sharing with us some of the best practices. We are all inspired by your highly lively words. And I would like to express our deep gratitude to Professor Tanya Gupta, ma'am, Secretary General of CTPD. Thank you so much, ma'am. Words are not enough to thank constant guidance and support to shape any event. And at the end, I would like to place my hearty thanks to all the members of CTPD and SDRF and our participants, because without you, we can't organize these type of FDPs. Thank you so much for attending this session and looking forward for much more such session. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. श्वेता मैम को थैंक्स कर दीजिए, इन्होंने इतनी मेहनत से वर्क किया. A special thanks to Dr. Shweta Rani ma'am, and who has moderated this session very beautifully, and it was a comprehensive, and you have noted each and every point which is discussed by our resource person. Thank you so much, Shweta ma'am. Thank you so much. Thank you so much, Paresh sir. बहुत अच्छा लगा और आगे भी आपको हम परेशान करते रहेंगे समय समय पर. कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सबका भी आगे काम करना है
हम तो भी गाइड ही कर सकते हैं। और सबसे अच्छा मुझे लगा कि देखिए आप बड़ा जल्दी हमारे लाइफ मेंबर भी बने और एज ए रिसोर्स पर्सन भी CTPD के लिए काम करने से अच्छा तो सब कुछ हो ही। मैंने सोचा कि ये समथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी बेनिफिट द community at NICE. हाँ जी सर, बिल्कुल, Our fraternity at NICE, and somewhere this is being lacking. Yes. So it's required. Okay sir, thank you sir. Thank you very much. And one more thing, please follow us on our Facebook page, Instagram page, and Twitter handle. I request everyone to Instagram I am not using. YouTube I am using it. Basically, this is a request to all the participants to please follow us for more such information about the conferences, seminars, and FDPs. Please follow us on our FB page, Instagram page, and Twitter handle. Thank you so much. Thank you. परेश सर, हम वैसे डिजिटल सर्किल भी चलाते हैं, अगर लगता है आपको कि डिजिटल स्किल्स की रिक्वायरमेंट है तो आप अटेंड कीजिएगा, वो काफी हेल्प करेंगे। मैं तो अटेंड, if I am free and I have no other work, then I do it. But थीसिस बहुत सारी पड़ी रहती है, रिसर्च पेपर बहुत सारे आते हैं, रिव्यू के नहीं है, और वो तो टाइम कम मिलता है। जी सर, ओके सर, थैंक यू सर। Thank you very much. Thanks for giving me the support and to give me the chance. Thank you very much. I think now I may leave it. Yes.